एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द लो टेम्पल रिटन बाय अरुण कोलातकर। द लो टेम्पल जो है ना एक पोएम है। लेट अस स्टार्ट नाउ। अ लो टेम्पल कीप्स इट्स गॉड्स इन द डार्क. You lend a matchbox to the priest. One by one, the gods come to light. Amused, bronze, smiling, stone, unsurprised. For a moment, the length of a matchbox, gesture after gesture, revives and dies. Stance after lost, stance is found and lost again. What was that, you ask? The eight-armed goddess. The priest replies, a septic match cuffs. You can count, but she has 18. You protest. All the same, she is still an eight-armed goddess to the priest. You come out in the dark, in the sun, and light a Charminar. Children play on the back of the 20-foot tortoise. इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम थोड़ा। अ लो टेम्पल, लेट अस स्टार्ट नाउ। इसके एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस हम बोल सकते हैं। दिस 16 लाइन पोएम एग्जाम्प्लीफाइज द सो कॉल्ड मॉकरी ऑफ द स्पीकर क्वाइट वेल। द एडजेक्टिव लो है ना जो, cannot be devoid of its negative connotations. Connotations means explanation of inferiority and inadequacy, though it is primarily descriptive, that is suggestive of lack of height. अब ये लो टेम्पल बोला गया है ना, तो इसमें ये लो जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कई तरह से लिया जा सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले सकते हैं। नो डाउट द टेम्पल इज़ लो, बट बाय हुज स्टैंडर्ड? टेम्पल लो तो है, लेकिन किसके स्टैंडर्ड से? ये पर्सपेक्टिव है आदमी का, सोचने का एक तरीका है। मैनी ओल्ड हाउसेज वर सिमिलरली लो विथ सच स्मॉल डोर्स दैट यू हैव टू या वी हैड टू बेंड डाउन टू एंटर। पुराने घर भी तो थे ना जहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे होते थे, जहाँ पे कि बेंड होके जाना होता था। बट बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ दोज for whom these houses were built, they must have been adequate. But जिन लोगों ने ये घर बनाए उनके लिए वो ठीक था। The speaker's response is typical of a modern person used to the modern architecture of steel and concrete, not of someone used to living in hut made in the same way of फॉर सेंचुरीज़। पुराने टाइम पे तो इसी तरह का होता था, लेकिन जैसे जैसे आदमी का मॉडर्न होता गया, आदमी जैसे जैसे आधुनिक होता गया, तो कंक्रीट की चीज़ें बनने लगी और जो दरवाजे थे आर्किटेक्चर भी चेंज होता चला गया। तो अगर कोई मॉडर्न आदमी पुराने टाइम के मंदिरों में जाएगा और वो ये सोचेगा कि वहाँ पे लो जो है डोर्स क्यों हैं, इतना छोटे डोर्स क्यों हैं, तो मीन्स उसका अपना सोचने का ये तरीका है। वो वहाँ जाके ये सोचेगा कि उसके जो डोर्स होने चाहिए ना वो बड़े होने चाहिए। What I have been suggesting is that the gap is not just ideological but technological. अब आइडियोलॉजी का फ़र्क नहीं है, किसका फ़र्क आ जाता है, या टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ जाता है। When a devout person enters a temple, he may bow before the deities, concentrating more on his relationship with the divine than on the physical features of his surroundings. अब जो आदमी भगवान को मानता है, जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक है, वो तो बहुत झुक के जाएगा मंदिर में, लेकिन जो नहीं मानता है उसको ये लगेगा कि ये डोर बहुत छोटा है। In Kolatkar's poem, however, just the opposite happens. The darkness inside the shrine prompts him to claim that the gods themselves are in the dark. And this लो टेम्पल, अब कोलात्कर जो है ना ये हिंदू ट्रेडिशंस को नहीं मानते थे, तो उनके अनुसार अगर वो बोलें तो वो बोलते हैं कि बहुत ही डार्क है, मंदिर के अंदर बहुत डार्क है एंड टेम्पल बहुत लो है। एक्चुअली द स्पीकर इज़ एज मच इन द डार्क एज द गॉड्स whom he cannot see clearly, है ना। It is not that the gods are in dark, but there is darkness inside the temple. Okay. The next line carry on this metaphor of literal enlightenment. Only when the matches are lit do the gods come to light. What happens next? Not devotion again, but a cool apprehension of amused bronze.
What the speaker sees are not icons but forms of bronze and stone, smiling stone. The depersonalization is unmistakable. The gods, however, are unsurprised, though the poet may be. The length of the matchstick, both in real time and visual time, creates the effect of cycles of the creation and destruction. मतलब मैस्टिक जलती है वो बुझती है, क्रिएशन भी हो रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है. जेस्चर आफ्टर जेस्चर रिवाइव्स एंड डाइज, स्टांस आफ्टर लॉस्ट, स्टांस इज फाउंड एंड लॉस्ट अगेन. ये पोएम से लिया गया है इन लाइन्स को. बट दीज जेस्चर्स एंड स्टांसेस आर लॉस्ट इन द पोइट ऑन द पोइट. ही हैज़ टू आस्क द प्रीस्ट हु दैट वॉज. द एक्सचेंज दैट फॉलोज इज इंटरेस्टिंग. अब जो बात हो रही है ना प्रीस्ट के बीच में और जो पोइट के बीच में, वो बताई गई है. द 8 आर्म्ड गॉडेस डजंट इम्प्रेस द स्पीकर. अ skeptic match cuffs. The speaker, with his sharp observation, even in darkness, uh, illustrated only with lighted only with matches, says that he has 8, not 8 arms. He has 18. जो पोइट हैं वो बोलते हैं 18 आर्म्स हैं, लेकिन प्रीस्ट क्या बोल रहे हैं कि 8 आर्म्स हैं. But this doesn't convince the priest. Tradition is stronger than empiricism. No wonder the speaker's skepticism, doubt जो है, doesn't abate. वो ख़त्म नहीं होता है, वो doubtful है फिर भी. On deeper reflection, however, the problem is somewhat more complicated. I wonder what Indian words were used to describe the 8-armed or 18-armed goddess. Perhaps knowing this will help us verify if clash is perception, in perception is linguistic and एक एपिस्टेमोलॉजिकल वर्ड यूज़ किया गया है इन्होंने यहाँ पे, तो जो उसका मतलब है तो यहाँ है, जस्ट वेट. इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल. नाउ वी आर डिनाइड द लग्जरी ऑफ सच रिफ्लेक्शंस इन द last 2 lines of the poem. The speaker, emerging from the low and dark temple, lights a cigarette and jokes about children playing on the back of a 20-foot tortoise. What is this 20-foot tortoise? Is it the poet's idea of fitting retort to the error of perception on the priest's part inside the temple? Or is it a rock shaped like a tortoise? We don't know, but once again, questions of perceptions are foregrounded. इस तरह के क्वेश्चंस फिर से आगे रखे गए हैं. On the whole, the poem shows an interaction between the two kinds of sensibilities, one traditional and the other modern, inside the dark interiors of a low temple. Perhaps the labels that we have used, tradition vs tradition and modernity, are neither precise nor productive. Try to formulate this difference in our own words. Yet this poem, indeed the whole book, is about this clash between the two ways of seeing and perhaps two ways of being. In the end, we will have to ask ourselves what each offers before making our choice. मतलब या तो हम ट्रेडिशन की तरफ जाएंगे या हम मॉडर्निटी की तरफ जाएंगे. ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.